Hello everyone. Again we are here with the sound machine. The next part starts from here. None that one can hear, but for all we know the creature may be whistling like mad on a very high note, or barking or croaking or singing a song. It's got a mouth, hasn't it? It's got a throat. The doctor looked at the fly and he smiled. He was still standing by the door with his hand on the doorknob. Well, he said, so you are going to check up on that? Now he was concentrating on a fly who was sitting on a small roll of copper wire on the workbench. He was asking from the doctor whether he can see the fly and what sort of a noise is that fly making at that time? Which kind of noise was being made by the fly? So we cannot hear it normally. So, but for all we know, that maybe the creature was whistling on a very high note, or barking like dogs, or croaking like frogs, maybe singing a song or humming a tune, because she has a mouth and a throat also. The doctor looked at the fly and smiled. The doctor was thinking what he is thinking at that time. He asked from him whether he is going to check whether the fly has got throat, or which kind of sound she was producing, singing or something. Some time ago, Klausner said, I made a simple instrument that proved to me the existence of many odd inaudible sounds. Often I have sat and watched the needle of my instrument, recording the presence of sound vibrations in the air when I myself could hear nothing. And those are the sounds I want to listen to. I want to know where they come from and who or what is making them. So here now Klausner was explaining him that once he made an instrument which was proving him the existence of many sounds which could be inaudible, which are inaudible, but often a while when he was sitting and watching the needle of the instrument which he created, which he made, that recording was presenting the presence of sound vibrations in the air, and when he himself could hear nothing, means at a in a simple manner वो कुछ सुन नहीं पा रहा था, लेकिन जब वो अपने इंस्ट्रूमेंट की निडल से उनको सुनने की कोशिश करता था तो वो सुन लेता था, कुछ अलग तरह के साउंड उसे सुनाई देते थे. And he wants to know from where they are coming and who is making those sounds. And that machine on the table there, the doctor said, is that going to allow you to hear these noises? It may. Who knows so far? I have had no luck, but I have made some changes in it. And tonight I am ready for another trial. This machine, he said. Touching it with his hands is designed to pick up sound vibrations that are too high pitched for reception by the human ear, and to convert them to a scale of audible tones. I tune it in almost like a radio. So when he was explaining about the machine which he prepared previously, doctor again asked, the machine which was lying on the table, is it the same machine, and is it going to allow him to hear those noises? He was not sure, so he said it may be, but he has made some amendments, he did some changes in it, and that night he was ready for another trial. This machine, he said, he was touching it with his hands, and it is designed to pick up sound vibrations which are too high pitched for reception by the human ear, and to convert them to a scale of audible tones.
जो मशीन उन्होंने बनाई थी वो उस तरह की, क्लॉसनर के अकॉर्डिंग वो उस तरह की थी जो साउंड वाइब्रेशंस को उठा सकता था, जो बहुत ऊंची हाई पिच के हो इंसानी कानों के लिए, और उनको उस स्केल पे ला सकता था कि वो ऑडिबल हो जाए। मतलब जो हमको ऑडिबल नहीं थी नॉर्मली, जो वॉइसेस हमको ऑडिबल नहीं होती हैं सिंपली, क्लॉसनर के अकॉर्डिंग उसने वो मशीन बनाई है कि वो वॉइसेस को उस लेवल पे ले आएगी, उस पिच पे ले आएगी, और वो एक आम इंसानी कान को ऑडिबल होगी। हाउ डू यू मीन? It is not complicated. Say I wish to listen to the squeak of a bat. That is a fairly high-pitched sound, about 30,000 vibrations a second. The average human ear cannot quite hear it. Now, if there were a bat flying around this room and I tuned into 30,000 on my machine, I would hear the squeaking of that bat very clearly. I would even hear the correct note, F sharp or B flat, or whatever it might be, but merely at a much lower pitch. Don't you understand? The doctor looked at the long black coffin box. And you are going to try it tonight? Yes. So when Klausner was explaining that he has made that instrument, and he was explaining him that if there were a bat flying around this room, कि अगर उस रूम में एक चमगादड़ भी उड़ती हुई आ जाए तो वो उसको 30,000 की स्पीड पे ट्यून करेगा अपनी मशीन पे, और उसके बाद वो उस चमगादड़ की चरमराहट की आवाज़ को आराम से सुन सकता है, एंड इवन द करेक्ट नोट F शार्प और B फ्लैट और वट एवर इट माइट बी, जो भी उसका करेक्ट नोट और पिच होगी उस चमगादड़ के आने की, जाने की, पंख फड़फड़ाने की, उसको वो उस लोअर पिच पे ले आएगा और वो उसको सुन लेगा। डोंट यू अंडरस्टैंड? क्या आप अभी भी नहीं समझे? डॉक्टर ने उस ब्लैक कॉफिन बॉक्स को देखा। डॉक्टर सॉ दैट लॉन्ग ब्लैक कॉफिन बॉक्स एंड ही was inquiring from him whether he was going to do that night only. He said yes. Well, I wish you luck. He glanced at his watch. My goodness, he said, I must fly. Goodbye. And thank you for telling me. I must call again sometime and find out what happened. The doctor went out and closed the door behind him. For a while longer, Klausner fussed about with the wires in the black box. Then he straightened up in a soft, excited whisper, said, Now we will try again. We will take it out into the garden this time. And then perhaps the reception will be better. Lift it up now, carefully. Oh my God, it's heavy. He carried the box to the door, found that he could not open the door without putting it down, carried it back, put it on the bench, opened the door, and then carried it with some difficulty into the garden. He placed the box carefully on a small wooden table that stood on the lawn. He returned to the shed and fetched a pair of earphones. He plugged the wire connections from the earphones into the machine and put the earphones over his ear. The movements of his hands were quick and precise. He was excited and breathed loudly and quickly through his mouth. He kept on talking to himself with little words of comfort and encouragement, as though he was afraid. Afraid that the machine might not work, and afraid also of what might happen if it did. So doctor bid a goodbye to him. He wanted to leave, and now again Klausner was busy with the box. He stood up and in a whisper sound he said, Now we will try again. We will take it out into the garden this time. अब हम इसको ट्राई करते हैं, गार्डन में ले जाते हैं, और तब शायद रिसेप्शन इसका बेटर होगा। इसको अभी उठाते हैं ध्यान से। अरे मेरे भगवान, ये तो बहुत भारी है। He was talking to himself, whispering to himself. उसने वो बॉक्स उठाया, डोर तक ले गए, but he found that he could not open the door without putting it down. उसके बाद उसने सोचा कि वो डोर तो खोल नहीं पाएंगे बिना उसको नीचे रख के।
फिर वो उसको वापस लेके गए, उसको बेंच पे रखा, डोर खोला और फिर उसको किसी तरह मुश्किल से एट लास्ट ही टुक इट इनटू द गार्डन, उसको गार्डन में ले गए। उन्होंने उस बॉक्स को बहुत ध्यान से एक छोटे से लकड़ी के टेबल पे रखा जो लॉन पे रखा हुआ था, लॉन में था। वो वापस उस शेड में वापस आए। उन्होंने अपने ईयरफोन्स निकाले, उन्होंने वायर कनेक्शन के साथ उनको प्लग किया ईयरफोन से मशीन में और फिर उन ईयरफोन्स को अपने कानों पे लगा लिया। अब उनके हाथों का जो मूवमेंट था बहुत तेज पर धीमा भी था, हल्का था। वो बहुत एक्साइटेड थे। ही वॉज ब्रीथ लाउडली एंड क्विकली थ्रू हिज माउथ, मीन्स he kept on talking to himself, and while doing this all the activities he was talking to himself and with little words of comfort and encouragement as though he were afraid. वो इतना डरे हुए थे दो चीज़ों से। पहली चीज़, शायद उनकी मशीन काम ही ना करे, और अगर वो काम करती है तब क्या होगा। दो चीज़ों से उनको डर था। तो इफ क्वेश्चन कम्स लाइक वाइज कि वाई he was afraid of two things. So which were the two things? First of all, that machine might not work, and also he was afraid that if it is going to be all right, then he stood there in the garden beside the wooden table, so pale, small and thin that he looked like an ancient, consumptive, bespectacled child. The sun had gone down. There was no wind, no sound at all. From where he stood, he could see over a low fence into the next garden, and there was a woman walking down the garden with a flower basket on her arm. He watched her for a while without thinking about her at all. Then he turned to the box on the table and pressed a switch on its front. He put his left hand on the volume control and his right hand on the knob that moved the needle across a large central dial, like the wavelength dial of a radio. The dial was marked with many numbers in a series of bands starting at 15,000 and going on up to 1 lakh. सॉरी 10 लाख। तो वो वहाँ गार्डन पे खड़े हुए और वुडन टेबल के पास वो इतनी पीली, छोटी और पतली थी कि वो ऐसा लग रहा था कि वो बहुत पुरानी, कंजम्पटिव मीन डिस्ट्रॉयर और रिलेटेड टू टीबी मीन्स ट्यूबरक्यूलोसिस, एंड बी स्पेक्टेकल चाइल्ड, मतलब बहुत पतले दुबले एक टीबी के पेशेंट बच्चे की तरह वो टेबल लग रही थी। सूर्य नीचे जा चुका था, वहाँ पे हवा नहीं चल रही थी, कोई भी आवाज़ नहीं थी। जहाँ वो खड़े थे, ही कुड सी ओवर अ लो फेंस इनटू द नेक्स्ट गार्डन, वो अगले गार्डन की एक छोटी वाली जो फेंस थी उसको देख सकते थे। And in that garden, a woman was walking down the garden with a flower basket on her arm. So he watched her for a while without thinking about her at all. उन्होंने उसे देखा लगातार। तब उन्होंने अपने बॉक्स को टेबल पे रखा और एक स्विच उसमें लगा हुआ था जिसको उन्होंने ऑन कर दिया। उन्होंने अपने लेफ्ट हैंड से उसका वॉल्यूम कंट्रोल को संभाला और राइट हैंड से उसके नॉब में जो बटन थे उनको, उनकी नीडल जो थी एक लंबे से सेंट्रल डायल घुमाया नीडल को नॉब से, जैसे डायल रेडियो में होता है। इफ़ यू वुड हैव सीन द ओल्ड रेडियो, तो वन डायल वाज देयर, तो उसमें बताता है कौन सा स्टेशन आपको लगाना है इतने मेगा हर्ट्स का, लाइक वाइज। तो इट वाज कंस्ट्रक्टेड इन दैट मैनर। तो उसमें बहुत सारे नंबर थे, एक सीरीज थी पूरी बैंड्स की जो 15,000 से स्टार्ट होके 10 लाख तक जाती थी। पूरी एक सीरीज उन्होंने बनाई थी। एंड नाउ ही वॉज बेंडिंग फॉरवर्ड ओवर द मशीन, और अब वो उस मशीन पे झुके हुए थे। His head was cocked to one side in a tense listening attitude. His right hand was beginning to turn the knob. The needle was traveling slowly across the dial, so slowly he could hardly see it move. And in the earphones he could hear a faint, spasmodic crackling. अब वो उस मशीन पे झुके हुए थे, उनका हेड एक तरफ से झुका हुआ था
and he was in a tense listening attitude, means he was tense to listen to that kind of sound which was going to be audible over with the help of that machine only. उनका जो दायां हाथ था वो उन्होंने बराबर वो नॉब पे इधर उधर घुमा रहा था नॉब को, एंड द नीडल वॉज ट्रेवलिंग स्लोली अक्रॉस द डायल, so slowly he could hardly see it move, and in the earphones he could hear a faint spasmodic का मतलब यहाँ पर है, वैसे तो prancing है इन इंग्लिश, बात रुक रुक कर झटके से होने वाला। तो अब जो उनको जो इतनी धीरे की जो आवाज़ थी वो जो देख सकते थे उसका मूवमेंट डायल का, और उनके ईयरफोन में वो एक बिल्कुल धुंधली सी रुक रुक कर झटके से होने वाली आवाज़ को सुन रहे थे। Behind these crackling sound, so crackling means sharp sound, तीखी आवाज़, he could hear a distant humming tone which was the noise of the machine itself, but that was all. Or as he listened, he became conscious of a curious sensation, a feeling that his ears were stretching out away from his head, that each ear was connected to his head by a thin stiff wire like a tentacle, and that the wires were lengthening, that the ears were going up and up toward a secret and forbidden territory, a dangerous ultrasonic region where ears had never been before and had no right to be. तो अब इस तीखी आवाज़ के पीछे वो एक दूर से गुनगुनाने की आवाज़ सुन सकते, टोन आ रही थी जो उस मशीन की आवाज़ भी हो सकती थी, उसकी ही थी, लेकिन इन सब के अलावा जो उन्होंने सुना वो एक उस क्यूरियोसिटी से भर गए, एक ऐसा उनको फीलिंग आई दैट इज ईयर्स वाज स्ट्रेचिंग आउट अवे फ्रॉम हिज हेड, कि ऐसा लग रहा था उन्हें कि जैसे उनके कान जो हैं उनके दिमाग से दूर जा रहे हैं, और हर कान उनके दिमाग से जुड़ा था एक छोटी सी वायर से, जैसे एक लाइक अ टेंटिकल होता है, जैसे ऑक्टोपस वगैरह के जो हाथ होते हैं कुछ पकड़ने के लिए, तो एक टेंटिकल की तरह था वो, एंड दैट द वायर्स वर लेंथनिंग, और वायर्स बहुत लंबी हो रही थी, और ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके कान ऊपर जा रहे हैं और एक सीक्रेट, एक मतलब रहस्यमयी टेरिटरी है जहाँ उनको नहीं जाना है, एक डेंजरस अल्ट्रासोनिक रीजन, ऐसा रीजन है, ऐसा क्षेत्र अल्ट्रासोनिक आवाज़ों का जहाँ पर ईयर्स हैड नेवर बीन बिफोर, जहाँ उनके कान कभी भी नहीं थे का मतलब ये उनके उन्होंने कभी सुनी नहीं थी ऐसी आवाज़ें, और उनको कोई अधिकार भी नहीं था कि वो वहाँ हों। The little needle crept slowly across the dial and suddenly heard a shriek, a frightful, piercing shriek, and he jumped and dropped his hand. Catching hold of the edge of the table, he stared around him as if expecting to see the person who had shrieked. There was no one in the sight except the woman in the garden next door, and it was certainly not she. She was bending down, cutting yellow roses and putting them in her basket. Again it came, a throatless, inhuman shriek, sharp and short, very clear and cold. The note itself possessed a minor, metallic quality that he had never heard before. Klausner looked around him, searching instinctively for the source of the noise. The woman next door was the only living thing in the sight. He saw her reach down, take a rose stem in the fingers of one hand and snip the stem with a pair of scissors. Again he heard the scream. It came at the exact moment when the rose stem was cut. Now here's a twist. नीडल धीरे धीरे डायल पे चल रही थी, अचानक उन्हें एक चीखने की आवाज़ सुनी, एक चुभती हुई चीखने की आवाज़, और वो तुरंत कूदे और उनके हाथ से वो गिर गई, जो उन्होंने टेबल पकड़ा हुआ था, हाथ उनका नीचे आ गया। उन्होंने चारों तरफ देखा और उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई इंसानी आवाज़ है, इंसान वहाँ खड़ा है जो वहाँ पे देख रहा है और देख के चीख रहा है, लेकिन उनको कोई दिखाई नहीं दिया। तो एक चुभती हुई आवाज़ थी और वो कूदा, मतलब उनके हाथ टेबल से नीचे हो गया। उन्होंने चारों तरफ देखा, उन्होंने देखा कि भाई किसकी आवाज़ है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ एक महिला खड़ी थी उस गार्डन के नेक्स्ट डोर पे, और सर्टेनली ये उनकी आवाज़ नहीं थी, क्योंकि वो झुकी हुई थी और येलो रोजेस कट कर रही थी और फिर उन्हें अपनी बास्केट में रख रही थी। फिर वही आई,
वैसी ही आवाज़ आई, एक इन ह्यूमन श्रीक, मतलब वो मनुष्य की आवाज़ नहीं थी. इट वॉज नॉट द वॉइस ऑफ अ ह्यूमन बींग. इट वॉज शार्प, शॉर्ट एंड वेरी क्लियर एंड कोल्ड. वो जो नोट था वो खुद इतना महीन था, एक मेटेलिक क्वालिटी लिया था, क्योंकि उन्होंने उसको कभी सुना ही नहीं था. क्लॉसनर ने चारों तरफ देखा. जब वो बहुत गहराई से उस आवाज़ का सोर्स ढूंढ रहे थे, तो only the woman who was standing toward the next door, adjacent to the next door, she was standing only, and except that woman there was no human being. He saw her reach down, take a rose stem in the fingers of one hand and snip the stem with a pair of scissors. अब जैसे ही वो उन्होंने उस महिला को नीचे झुकते देखा, उन्होंने उस महिला ने एक रोज स्टेम को फिर से काटा, तो फिर वैसी ही चीख की आवाज़ उनको सुनाई दी. It came at the exact moment when the rose stem was cut. At this point, the woman straightened up, put the scissors in the basket with the roses, and turned to walk away. Mrs. Saunders, Klausner shouted, his voice shrill with excitement. Oh, Mrs. Saunders! अब उनको ये यकीन हो गया कि जो आवाज़ आ रही है ये उस रोज़ के कटरे की आवाज़ है. उन्होंने उस महिला को आवाज़ से बुलाया, मिस साउंडर्स, मिसिस साउंडर्स. तो उन्होंने उनको मतलब थोड़ा गुस्से में या थोड़ा इरिटेटेड होकर के भी बुलाया. एंड लुकिंग राउंड द वुमेन सॉ हर नेबर. उन्होंने चारों तरफ देखा. उस महिला ने अपने नेबर को देखा. उसके लॉन पे वो खड़े हैं, फैंटास्टिक आर्म वेविंग लिटिल पर्सन विद अ पेयर ऑफ ईयरफोन्स ऑन हिज हेड, कॉलिंग टू हर इन अ वॉइस सो हाई एंड लाउड दैट शी बिकेम अलार्म. तो शी सॉ at the back that her one of the neighbor is standing over there. कान में ईयरफोन लगा के वो उनको इतनी ज़ोर से बुला रहे हैं कि वो बिल्कुल चौंक गई. Cut another one, please cut another one quickly. She stood still staring at him. Why, Mr. Klausner, she said. What's the matter? Please do as I ask, he said. Cut just one more rose. Mrs. Saunders had always believed her neighbor to be a rather peculiar person. Peculiar means a bit strange. Now it seemed that he had gone completely crazy. She wondered whether she should run into the house and fetch her husband. No, she thought, no, he's harmless. I'll just humor him, certainly. Mr. Klausner, if you like, she said. She took her scissors from the basket, bent down and snipped another rose. Again Klausner heard that frightful throatless shriek in the earphones. Again it came at the exact moment the rose stem was cut. He took off the earphones and ran to the fence that separated the two gardens. All right, he said. That's enough. No more. Please, no more. The woman stood there, a yellow rose in one hand, clippers in the other, looking at him. I'm going to tell you something, Mrs. Saunders, he said. Something that you won't believe. He put his hands on top of the fence and peered at her intently through his thick spectacles. You have this evening cut a basket full of roses. You have with a sharp pair of scissors cut through the stems of living things, and each rose that you cut screamed in the most terrible way. Did you know that, Mrs. Saunders? No, she said. I certainly did not know that. अब क्या हुआ, उन्होंने मिसिस सॉन्डर्स से कहा कि आप एक और रोज़ की स्टेम को काटिए. उन्होंने ऐसा किया. पहले तो उन्होंने सोचा कि वो भाग जाएं और दौड़ के अपने हस्बैंड को बुलाएं. फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, वो थोड़ा सा वो भी मजाक कर लेंगी, और उन्होंने वैसा ही किया जैसा कि क्लॉसनर ने उनको कहा था, डायरेक्शन दिया था कि आप एक स्टेम और काटिए. उन्होंने उसको काटा और क्लॉसनर ने वही आवाज़ सुनी. अब क्लॉसनर बिल्कुल एक्साइटेड होके अपना दौड़ के गए और वहाँ पे उनकी गार्डन की फेंस के ऊपर एक हाथ रख के बहुत ध्यान से झांका और उनको कहा कि जब आपने इसको काटा तो फिर इसमें से वैसी ही चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी जैसे लिविंग थिंग्स के काटने की आवाज़ आती है. क्या आप जानती हैं मिसेस सॉन्डर्स? उन्होंने कहा, नहीं, मैं तो नहीं जानती थी. लेकिन इट हैपन्स टू बी ट्रू, ही सेड.
He was breathing rather rapidly, but he was trying to control his excitement. I heard them shrieking. Each time you cut one, I heard the cry of pain, a very high pitched sound, approximately 132,000 vibrations a second. You could not possibly have heard it yourself, but I heard it. अब उन्होंने उनसे पूछा कि क्या आपने उस रोज की स्टेम के चिल्लाने की आवाज़ सुनी? पेनफुल आवाज़ थी. Did you really, Mr. Klossner? She decided she would make a dash for the house in about 5 seconds. उन्होंने ये निश्चय किया कि वो जल्दी से दौड़ के जाएं हाउस में, 5 seconds में ही चली जाएं. You might say, he went on, that a rose bush has no nervous system to feel with, no throat to cry with. You would be right. It hasn't. Not like ours anyway. But how do you know, Mrs. Saunders? And here he leaned far over the fence and spoke in a fierce whisper. How do you know that a rose bush doesn't feel as much pain when someone cuts its stem in two as you would feel if someone cut your wrist off with a garden shears? How do you know that it's alive, isn't it? Yes, Mr. Klossner. Oh, yes. And good night. Quickly she turned and ran up the garden to her house. Klossner went back to the table. He put on the earphones and stood for a while listening. He could still hear the faint crackling sound and the humming noise of the machine, but nothing more. He bent down and took hold of a small white daisy growing on the lawn. He took it between thumb and forefinger and slowly pulled it upward and sideways until the stem broke. Now he was explaining it to Mrs. Saunders that how like a living being, a rose stem also had throat, it can also shriek. He was giving her the example that if her wrist is going to be cut off with a garden shears, how she will be able to know it. वो जिंदा है, क्या वो जिंदा नहीं है? कौन जिंदा है? रोज बुश. उन्होंने हाँ किया. यस यस मिस्टर क्लॉसनर. और वो डर के जल्दी से अपने गार्डन से होते हुए अपने घर भाग गई. क्लॉसनर वापस अपनी टेबल पे गए. उन्होंने अपने ईयरफोन्स पहने और फिर उनको लिसना शुरू किया. वो सुन सकते थे एक तीखी आवाज़ और हमिंग नॉइज़ ऑफ द मशीन. ये वो जो मशीन है उसमें से भी नॉइज़ आ रही है, बट नथिंग मोर. अब वो फिर झुके. उन्होंने अपने एक छोटे से वाइट डेजी जो उनके लॉन में उगी हुई थी उसको अपने थंब और पहली फिंगर के बीच में उसको किया और धीरे से खींच के ऊपर खींचा और उसको तोड़ दिया, उसके स्टेम को. From the moment he started pulling to the moment when the stem broke, he distinctly means clearly, in the earphones, a faint high-pitched cry. Curiously inanimate, he took another daisy and did it again. Once more he heard the cry, but he was not so sure now what it expressed. Pain. No, it was not pain, it was surprise. Or was it? It did not really express any of the feelings or emotions known to a human being. It was just a cry, a neutral, stony cry, a single emotionless note, expressing nothing. It had been the same with the roses. He had been wrong in calling it a cry of pain. Expressing nothing, it had been the same with the roses. He had been wrong in calling it a cry of pain. A flower probably did not feel pain. It felt something else which we did not know about. Something called twine or spurl or pliniment or anything you like. Pliniment, spurl or pliniment means to kick about or struggle. So, अब उन्होंने फिर वही आवाज़ सुनी और वो समझ गए कि ये इट एक्सप्रेस पेन. एक्चुअली पेन नहीं है, ये एक सरप्राइज है. और क्या था? इट डिड नॉट रियली एक्सप्रेस एनी ऑफ द फीलिंग्स और इमोशंस नोन टू अ ह्यूमन बीइंग. मीन्स ऐसा कोई भी फीलिंग या इमोशन ह्यूमन बीइंग ने अभी तक जो नहीं किया था. और ही हैड बीन रॉन्ग इन कॉलिंग इट अ क्राई ऑफ पेन. वो
उनको गलत लग रहा था अगर वो उसे चिल्लाहट, दर्द की चिल्लाहट मानते। और वो ये भी साथ साथ कह रहे थे कि एक फूल को शायद दर्द नहीं महसूस होता, वो कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा जो आवाज़ है, वो जो साउंड वहाँ से निकल के आ रहा है एक स्टेम को तोड़ने पे, वो ऐसा आवाज़ प्रोड्यूस कर रहा है कि समथिंग की मतलब कुछ स्ट्रगल, किसी संघर्ष कैसी आवाज़ को वो प्रोड्यूस कर रहा है। He stood up and removed the earphones. It was getting dark and he could see pricks of light shining in the windows of the houses all around him. Carefully, he picked up the black box from the table, carried it into the shed, and put it on the workbench. Then he went out, locked the door behind him, and walked up to the house. The next morning, Klosner was up as soon as it was light. He dressed and went straight to the shed. He picked up the machine and carried it outside, clasping it to his chest with both hands, walking unsteadily under its weight. He went past the house, out through the front gate, and across the road or to the park. There he paused and looked around him. Then he went on until he came to a large tree, a beech tree, and he placed the machine on the ground close to the trunk of the tree. Quickly he went back to the house and got an axe from the coal cellar and carried it across the road into the park. He put the axe on the ground beside the tree. अब वो खड़े हो गए, उन्होंने अपने ईयरफोन्स हटाए, अंधेरा हो रहा था, वो कांटे देख सकते थे विंडोज़ की लाइट में चमकते हुए अपने चारों तरफ, और धीरे से सावधानी पूर्वक उन्होंने अपने ब्लैक बॉक्स को उठाया टेबल से, उसे वो अपनी शेड में ले गए और उसे अपने वर्क बेंच पे रख दिया। फिर वो बाहर गए, दरवाज़ा पीछे से बंद किया और घर में चले गए। नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन ही वोक अप as soon as it was light early in the morning, he dressed up and went straight to the shed. He picked up, उन्होंने अपनी मशीन उठाई, उसे बाहर ले गए, उसको अपनी चेस्ट में दोनों हाथ से पकड़ा हुआ था, वो बिल्कुल अपने उसके वेट से बहुत अनस्टेडीली चल पा रहे थे, ठीक ठाक नहीं चल पा रहे थे। फिर वो आउट थ्रू द फ्रंट गेट एंड अक्रॉस द रोड टू द पार्क, वो घर के वेंट पास द हाउस आउट थ्रू द फ्रंट गेट, फिर वो घर के पीछे से गए और पहले फ्रंट गेट पे पहुँचे और फिर रोड पार करते हुए वो पार्क में गए। वहाँ पे वो रुके, उन्होंने चारों तरफ देखा, फिर उन्होंने मशीन को ग्राउंड पर एक पेड़ के तने के पास रख दिया। जल्दी ही वो वापस घर गए, एक कुल्हाड़ी उठा लाए कोल सेलर से, उनकी जहाँ कोयला रखते थे वो कोयले की कोठरी से एक कुल्हाड़ी उठा लाया और उसे उन्होंने रोड पर ले आए इनटू द पार्क, फिर वो पार्क में ले आए। उन्होंने एक्स को ग्राउंड पे पेड़ के पास रखा, फिर उन्होंने चारों तरफ देखा, झांकते हुए नर्वसली थ्रू थिक ग्लासेस इन एवरी डायरेक्शन, उन्होंने हर दिशा में चारों तरफ देखा, वहाँ पे कोई भी नहीं था और सुबह के 6 बजे थे। उन्होंने अपने ईयरफोन्स को हेड पे रखा, स्विच ऑन द मशीन, मशीन की को स्विच ऑन किया। ही लिसन फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए सुना टू द फेंट फैमिलियर हमिंग साउंड, वही हमिंग साउंड जो उनकी मशीन से आ रही थी। उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी उठाई, टुक अ स्टांस with his legs wide apart and swung the axe as hard as he could at the base of the tree trunk. Stance वो opinions that somebody expresses publicly about something. तो उन्होंने एक अपने पैरों को थोड़ा फैलाया, अपनी एक्स कुल्हाड़ी को घुमाया उतना तेज़ी से कि वो सीधे पेड़ के तने पे वार करे। द ब्लेड कट डीप इनटू द वुड एंड स्टक देयर, अब वो जो कुल्हाड़ी का ब्लेड था वो उस वहाँ पे फंस गया। एंड एट द इंस्टेड ऑफ इम्पैक्ट ही हर्ड द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉइज इन द ईयरफोन्स। इट वॉज अ न्यू नॉइज अनलाइक एनी ही हैड हर्ड बिफोर, अ हार्श noteless enormous noise, a growling, low-pitched, screaming sound, not quick and short like the noise of the roses, but drawn out like a saw blasting for fully a minute, loudest at the moment when the axe struck, fading gradually fainter and fainter until it was gone.
अब उनको जो आवाज़ सुनाई दी वो वैसी आवाज़ नहीं थी जो स्टेम के कटने की आवाज़ थी। ये आवाज़ जो थी ये हार्श थी, नोटलेस थी और बड़ी सी आवाज़ थी, लो पिच की थी, एक चिल्लाती हुई चीखती हुई आवाज़ थी, बहुत जल्दी नहीं लेकिन धीमी, जैसे रोज़ से जो आवाज़ें आ रही थी लेकिन इसमें सुबकने की। और वो जो आवाज़ थी वो 1 मिनट तक रही। उस समय वो उतनी तेज़ थी जब वो कुल्हाड़ी उस पे फंसी और धीरे धीरे वो धीमी होती चली गई और तब तक कि पूरी तरह नहीं चली गई। Klosner stared in horror at the place where the blade of the axe had sunk into the wood flesh of the tree. Then gently it took the axe handle. उन्होंने उस जगह को देखा जहाँ पे वो कुल्हाड़ी का ब्लेड फंस गया था उस लकड़ी के बीच में, और फिर उन्होंने एक्स का हैंडल उठाया, वर्क द ब्लेड लूज एंड थ्रू द थिंग ऑन द ग्राउंड। उन्होंने उस ब्लेड को ढीला किया और उसे ग्राउंड पे फेंका अपनी उंगलियों से। जब उन्होंने touched the gash that the axe had made in the wood, touching the edges of the gash, trying to press them together to close the wound, and he kept saying, "Tree, oh tree, I'm so sorry, but it will heal." अब जब उन्होंने उसमें से उसको बाहर निकाला अपने हाथों से, जो उसमें घाव हो गया था, जो गड्ढा हो गया था कुल्हाड़ी फंसने से, उसमें उन्होंने हाथ लगाया और ट्री को उन्होंने पैसिफाई किया कि अरे ट्री मैं आई एम वेरी सॉरी और मैं इतना दुखी हूँ, ये जल्दी तुम्हारा घाव भर जाएगा, जल्दी ही ये सही हो जाएगा।